Okay, now we are live. Very, very good morning to all of you. And today we are going to interview a very, very special guest because a student who has cleared the exam, a recent exam, and we are going to talk about his strategy, learn from his experience in detail. So we did one session with a lot of students, if you remember, day before, where every selected candidate joined in and we had a lot of questions, but this time it is going to be one student. In detail strategy is what we are going to learn and understand from him. See guys, there are always pointers you can take away from selected candidates and learn from their journey. What you can incorporate is what they have to say about each section, their strategy. Okay, and so we are here to learn from a member like that. Okay, but before I begin, I want everybody to share the session also. You will get an opportunity to ask your questions. How do I prepare? What should be my approach? Whatever you want to know. Okay, so very important for people targeting 2022 exams, right? So I welcome OSHO to the channel, Oliveboard YT. OSHO, first thing I would like is for you to give introduction to everybody. Your brief, your introduction. Tell about yourself to everybody here. Okay, ma'am. First of all, good morning, ma'am, and good morning to all the students, all the candidates, जो aspiring aspirants भी हैं, जो देख रहे हैं session को. Good morning to all of them, and congratulations to all the students who have qualified this year's IBPS PO or SBI PO or any exams they have given. My name is OSHO, and I belong to Agra. I was born and brought up in Agra, UP. I did my graduation, I did my schooling, I did my whole education in Agra itself. I completed my graduation in 2018, and after completing my graduation, I started preparing for civil services because that was the main dream, to be a civil servant. But after 2 years of preparation, and when I was not able to get a good positive result due to Corona and all, a lot of pressure and a lot of depression was there, a lot of anxiety was there, and I switched to banking because banking, the main reason was for all the civil services examination, there are very less opportunities in a year. There are only 1 or 2 examinations, one UPSC examination or a one state civil services examination. But in banking, in 1 year, there are a lot of opportunities. SBI conducts 2 examinations, IBPS conducts 4 examinations. Then there is RBI, Nabard, SEBI. There are many opportunities. So I switched to banking. And second most important reason was one of my younger sisters, she was preparing for banking. So she inspired me to join banking. And then once I get successful, now when I'm good, now I can pursue UPSC and civil services ahead in my life. So that was the main reason I switched. And finally, today, after 3.5 years of preparation, I have finally cleared IBPS PO. 3.5 years. Yes, okay. So 3.5 years for complete bank preparation. No, ma'am. UPSC include civil service included. Okay. If I tell you separate, if I ask you separately for banking, how much time? From 1 year and 3 months. I started preparing for banking in December 2020 when some of the exams reopened their forms for those students who had not filled the form in the beginning. Okay. 1 year, 3 months. Okay. Yes, in 1 year, 3 months, you got your final selection. I got three selections. IDB assistant manager also I qualified. What are the 3? IDB assistant manager next? IBPS PO and IBPS clerk. Both IBPS clerk and IBPS PO. Yes, excellent, Osho, excellent. So, see, Rajshri has a lot of questions from you, but I'll come to your questions, guys, in a while. Yeah. So, interesting to know that you switched from civil services to now banking, right? Okay. Not bad, but what kept you motivated? Like, you made a decision. I got that point. Okay, because here you say that there are many opportunities. Those students cry that the notification vacancies are less, but you considered it as an opportunity. You get many exams to write. Okay, very, very, I think a smart move here. But what motivated you? Like, and what was, your dream was civil services. So what was that one factor? Was it urgency only that, okay, I want a job and then? Ma'am, starting when I started preparing after my graduation, it was a dream that I wanted to be an IAS officer from the very beginning. My father also shared the same dream with me.
But later, after 2 years, when I was not able to qualify a preliminary examination for UPSC, then after 2 years of studying the same thing again and again, that gave me a lot of negative vibes. And also many people around me, they also started talking up behind me also that कि जब तक तैयारी इतनी ज़्यादा नहीं करोगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम नहीं कर पाओगे. That negative feeling was very much to take. A lot of negative feelings were there. Then finally I thought कि if I want to become an IAS officer, I have to be stable in my life first. I wanted to get settled and stable first. So that is why I switched to banking. Because for me, compared to civil services, banking was a comparatively easier option. That is why I switched to banking. And anybody who's studying for civil services, you study so much in depth, then you find banking doable, right? Yes, ma'am. Actually, my graduation background is life sciences. I did my graduation in zoology, and then shifting from zoology to banking was a very tough task. But UPSC preparation, especially preparation for economy and polity, that 2 year of basic and again preparation, again and again clearing the basics, forgetting and all, that made me switch to banking very easily. That made this journey very easy for me. But why not zoology? I wanted to pursue zoology, but there are very less opportunities for people who do their graduation in life sciences. Either you want to be, you can become a scientist and study the rest of your life, or you can go to civil services. Also, there is a different service, Indian Forest Services. There you can go. So I wanted to be the IFS, the Forest Services Officer there, but that took a long journey. That was taking a bit longer. And I never wanted to be a professor or a scientist in any university. That is why I switched to banking. Yes. Okay. And would you be continuing with your UPSC dream after the selection also? Definitely, ma'am. That is the main dream. You will. Banking is one of the steps which I am on now, and I cherish that, and I thank everyone who helped me to be here. But my main dream is to be a civil servant, and I will be there definitely. Oh, I wish you all the best. Yeah. And one more thing which I wanted to ask you is, you talked about switching from a field which is very different, zoology, and then starting to read economics, basics of banking, or it is not easy. From a very different background, it becomes tough, right? It is like studying an all new subject, right? Like how we do a new language. It is tough. It is not too easy. So when you started, what are the sources you used, or with a very basic, what was the motivation factor to start from that very, very basic? I know UPSC, you started economy, basic economy for UPSC. So probably, did you find interest in that subject? Okay, because right now a lot of people are asking about current affairs. Okay. Yes, ma'am. So current affairs, and also people are asking regarding your scores in current affairs. This IBPS PO scores in current affairs, because I guess it wasn't very easy section, but how did you manage we'll start with current affairs strategy only, in fact. So how did you manage, and what was your daily schedule for current affairs? What was your strategy for this particular section, current affairs section? Because now students are seeing they don't give very direct questions. Whatever you learn and mug up in PDFs, they don't give very direct questions. You have to read a lot in depth also to get good score in current affairs. So what was your strategy? From current affairs, actually, when I was preparing for civil services, there is a difference in the current affairs strategy and approach to study current affairs, both in banking and civil services. They are very different. For example, if what is the current GDP of India? Banking, they will ask what is the current GDP, what was the last year's GDP rate. But in UPSC, they will never ask you what is the number. They will always ask you why India is the GDP of India is increasing, or why is it decreasing. That that approach to study every subject in civil services actually made it easier for me to come into banking and approach the current affairs in banking also. Plus, there was I had a habit of reading newspaper daily.
So I used to read, actually when I was preparing for civil services, I used to read 2 newspapers daily, the Economic Times and the Hindu. Okay. Plus there were many other PDFs. The Mint is there. We used to refer to all those sources. But when I came to banking, I started taking Aditya sir's TNA sessions daily. Actually, I used to write down each and every news in my notebook. In 1 year of preparation, I have prepared 4 or 5 registers of 4 and 5 registers of current affairs only. I used to write. But also, usually I feel like, this is my viewpoint. You can have a totally different strategy. Okay, as a UPSC student, I feel that is your habit, like note making, because I found this is something very common that they do. They make lots and lots of notes, and because in the end they have to revise before the exam. But as banking candidates, I don't know why I feel when PDFs are there and note making is time consuming. I don't know why, and probably many people or many students have that. I want you to clear this. Isn't it a lot of time going? Time it is too time consuming that you're making notes for you are getting the news in the video, whatever you used to watch, like for example TNA daily. Yes, ma'am. Okay, you have the videos with you, and then you get the compiled for session as well as PDFs, right? Yes, so isn't that time consuming to make your own notes for banking aspirants also? Would you suggest the same, making your own notes? Yes, ma'am. I will suggest everyone to start making their own notes, because the more you write, the more you get in habit of remembering what you wrote. Because as a UPSC aspirant and as a banking aspirant, मैं मुझे कभी वो बार बार याद करने की habit नहीं थी. I never used to learn current affairs. Before TNA starts every morning, 45 minutes I used to get ready, and in those 45 minutes before the session, I used to just read again and again, just read again and again the current affairs what I have written the previous day. I used to read again and again. And apart from the TNA sessions, I used to attempt MCQs. Attempt as many MCQs as you can. Not only if you get a printed PDF or from a PDF, attempt the MCQs from the PDF. If you have test series if you can buy a test series from just for current affairs only, for GA only, try to attempt as many MCQs as you can. And those MCQs which you are not able to attempt or which went wrong, which you answered wrong, either take a screenshot or note them down in your notebook. I had a habit of noting it down. So next day when I'm in TNA, before TNA, those 45 minutes, I used to read that again and again. That helped me a lot. I never used to learn it, but reading it again and again in 45 minutes, I used to read it almost 10 times. That helped me a lot. So revision is the basic thing. It doesn't matter if you refer to 10 sources or 11 sources, 4 sources, 5 sources, doesn't matter. The only thing that matters is just believe in one or two soururces, and revision is a must. So revision is something that always helped me. Can you also tell me, I'm actually curious to know your time schedule, basically how many hours for each section on a regular basis? And did you do pre plus mains preparation simultaneously, or it was pre and then I will clear and then I'll go to move mains? No, what was it? No, ma'am. It was a common preparation for both preliminary and mains examination. Actually, before I started, and this is very important thing which everyone should understand, that jo cutoff hoti hai, it is not a cutoff. It is not something that you have to achieve. It is something which an examination demands. So you have to know what is your level of preparation and what is the difference between your level of preparation and what the paper is demanding. That difference you have to overcome. If you can do better than that, if you can keep your goal way above the cutoff, and then if you just work on the differences between what is your level and what is the question paper or what is the examination demand, that if you can overcome, that is the best thing. Before I started preparation for any section, because I was preparing for civil services before, and banking mein there are a lot of new things that we have to learn. So I pointed out first, I noted down all those things which I didn't knew, which I was not able to understand, or for example, puzzles mein, in UPSC there were very easy puzzles, because the paper is there are 80 questions in the examination and you have 2 hours to do them. That is a way lot of time. तो मेरे लिए जो सबसे important चीज थी जिसमें मुझे सबसे ज्यादा practice करनी पड़ी, that was puzzles. And वो 35 questions को 20 minutes में कैसे attempt करना है, that is the main fight which I had to do. उसी में मुझे सबसे ज्यादा effort लगाना पड़ा.
बाकी बेसिक्स में कुछ जगहों पर मुझे बेसिक्स भी प्रिपरेशन करना पड़ा. बेसिक प्रिपरेशन इज इम्पोर्टेंट. वो अप्रोच लोगों को समझनी चाहिए. वही अप्रोच Concepts. सबकी हेल्प करेगी. यस मैम, कॉन्सेप्ट सबके लिए हेल्प करेंगे. अच्छा, do you remember your score? अच्छा, Rajshri is very keen to know your current affairs score. Please share that. मेरा स्कोर था 22. आई अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस एंड आई गॉट 22 पॉइंट समथिंग स्कोर. 22. Yes Okay. ma'am, I attempted 24 questions, 22 point something. 24 attempts and you got a score of 22 points. Yes something, right? Is it okay? Rajshri, your answer, right? Aspirant, you can ask your doubt also. Everybody will get a chance to ask as many questions as possible. We have enough time. OSHO, you have to go somewhere? No. No, you will ma'am. give us time, right? Yes, so ma'am. OSHO is there to guide us. Okay. Acha. So you talked about your puzzles was your main hurdle, Yes, which you overcame. You gave more time to it. Yes, ठीक है. ग्रामर किया था. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आकाश का. ये आंसर करो. ग्रामर किया था क्या आपने? मैम एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है स्कूलिंग का, इट इज द कॉन्वेंट स्कूल बैकग्राउंड. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम एलकेजी यूकेजी ओनली, वी हैव ऑलवेज बीन एनकरेज टू कन्वर्स इन इंग्लिश. तो इंग्लिश जो था वो मेरे लिए उतना बड़ा बैरियर नहीं था. बट हाँ, मुझे जो वर्क करना पड़ा सबसे ज्यादा वो था क्लोज टेस्ट वगैरह में. एंड ग्रामर जो था मुझे बेसिक से फिर से पढ़ना पड़ा, बिकॉज ग्रामर लास्ट टाइम आई स्टडीड इन 7th और 8th. उसके बाद कभी ग्रामर बेसिक नहीं पढ़ा. तो ग्रामर को बेसिक से थोड़ा रिवीजन करना पड़ा. एंड फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे जिन पर थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ा. बाकी इंग्लिश वाज नॉट अ वेरी बिग बैरियर फॉर मी. इंग्लिश में आई वाज फाइन. इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड आई थिंक 25 क्वेश्चंस इन मेंस आल्सो एंड आई थिंक ऑल ऑफ देम वर करेक्ट. तो इंग्लिश में आई वाज फाइन. यस मैम, एक्यूरेसी वाज फाइन. हाँ, तो ग्रामर करा है. यस मैम, मैं ये ग्रामर बताऊं करा एज अ इंग्लिश फैकल्टी वेरी स्ट्रिक्टली. अभी ओशो की बात सुन लो. इफ यू डोंट एग्री विद मी, यू लिसन टू ओशो. ही सेइंग दैट ही डिड रिवाइज. मतलब what I feel is from your answers also, Osho, you did not take a chance anywhere. No, like ठीक है, I am from a convent school. Why do I want? Like people usually do that. Okay, why do I want grammar? I know from the flow, from the sound, I will understand and I'll answer. No. So Osho did not take a chance. You did revise grammar, which is good to know. Everybody should know that, right? Yes, ma'am. Achha, Arvind is asking, do you attend editorial 7 a.m. class? Editorial. Definitely. You already told that you give a lot of time to reading. So definitely. Can you tell the importance of editorial to our students? From editorials, not only editorials, many articles, reading news, magazines also. I used to buy Yojana, I used to buy Down to Earth magazine for geography also. So these articles and editorials were very important. Especially मुझे editorial का जो vocabulary वाला part था वो आपके 7 AM के session से ही सबसे ज़्यादा helpful मिला. vocabulary वाला part and the importance of phrases and all, बीच में जो भी vocabulary main important चीज था, that helped me a lot. Your 7 AM sessions, morning sessions helped me a lot in editorial. And editorial actually is very important because exams में comprehension वाला एक बहुत important part होता है. Comprehension, understanding is the most important thing. और वो तभी आएगा when you are in a habit of reading more and more articles and understanding them while you are reading. कई बार ऐसा होता है लोगों को 1-2 बार से 3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है. कई बार हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ्स को, कॉम्प्रिहेंशंस को एग्जाम में. दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग द आर्टिकल्स एंड अंडरस्टैंडिंग देम व्हाइल यू आर रीडिंग, दैट हेल्प्स अ लॉट. उसके लिए आपको दोबारा कॉम्प्रिहेंशंस को एग्जामिनेशंस में नहीं पढ़ना पड़ता एग्जाम टाइम में. एंड पर मैं ये बोलती हूँ ओशो स्टूडेंट्स को, जैसे आपने बोला कि कई बार एक बार में नहीं समझ में आता, उतना टाइम दे दो आप रीडिंग. तो नहीं लगता कि वेस्ट थोड़ी कर रहे हो आप टाइम, बेसिकली आप सीख ही रहे हो. हाँ, एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया था, ओलिवबोर्ड के स्पेशली टेस्ट देना स्टार्ट किया था, तो वो टेस्ट अलग ही लेवल पर थे. लाइक उनके जो एडिटोरियल जो कॉम्प्रिहेंशंस आते थे, दे वर एक्चुअली मैचिंग द लेवल ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स. तो उसको मुझे कई बार ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 6 क्वेश्चंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंशन इन एन एग्जाम and we can give 6 to 7 minutes to that. If you want, we can take 1.5 minutes to read the comprehension and maybe give 2 minutes more to attend the questions. But मुझे उस चीज को 2 से 3 बार comprehensions को पढ़ना पड़ता था. That took a lot of time. तो मेरे attempts जो थे वो overall उस sections के लिए वो कम हो जाते थे. तो वो मैंने कम इसलिए, वो मैंने जो attempts थे वो increase इसी की help से किए कि understanding जो है vocabulary से, phrases से, आर्टिकल्स की, वो तभी आएगी जब आप रेगुलर रीडिंग करेंगे, रेगुलर हैबिट होगी रीडिंग की. दैट इज अ मस्ट. दैट आई डिड इट पर्सनली. ओके,
ठीक है, तो ओशो का मैसेज मैं भी क्लियर कर दूं कि इट इज ओके अगर स्टार्टिंग में टाइम भी लग रहा है, रीडिंग को टाइम दो। कितना आवर्स देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ओशो डेली रीडिंग को? मैम डेली everyone should read at least 2 to 3 articles. Everyone should read 2 3 to 3 मिनिमम पर डे। minimum per day उससे every भी day. बहुत इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हो Yes 2 से ma'am. 3 तो बहुत कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। Yes ठीक ma'am. है, गुड। अच्छा, क्वांट की स्ट्रेटजी, ज्योत्सना, कमिंग टू दैट आल्सो। अच्छा, शिवांगी सेइंग वन गुड क्वेश्चन शिवांगी हैज, Yes ma'am. प्री और मेंस का डिवीजन क्या था आपका टाइम का ऑन अ डेली बेसिस? लाइक कितना टाइम आप प्री प्रिपरेशन को देते थे प्रीलिम्स का, एंड हाउ मच टाइम फॉर मेंस लेवल प्रिपरेशन ऑन अ डेली बेसिस? ओके मैम, मैं प्री और मेंस के लिए आई नेवर गिव सेपरेट टाइमिंग, कभी मैंने प्रिपरेशन को नहीं दिया। बेसिकली व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपरेशन, आई स्टार्टेड विद बोथ फॉर क्वांट एंड फॉर रीजनिंग। आई स्टार्टेड विद क्लियरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट। हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो क्वांट हो चाहे वो रीजनिंग हो, उसके जो एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, आप उनके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, ताकि किसी भी एंगल से अगर आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो आप उसका आप डिसीजन ले सके तुरंत कि उसको सॉल्व कैसे करना है। दैट वाज द मेन थिंग। तो उसके लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। बेसिक्स क्लियर करने के बाद मैंने बेसिक पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। देन आई वेंट टू प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स, एंड देन आई वेंट टू मॉक टेस्ट सीरीज, जो हम लोग परचेज करके या कैसे भी हम लोग वेरियस प्लेटफॉर्म से करते हैं। दैट वाज द स्ट्रेटेजी व्हिच आई यूज्ड फॉर बेसिक टू मॉक टेस्ट एंड ऑल। सेपरेटली मैंने कभी वो नहीं किया, टाइम नहीं दिया। बट हाँ, व्हेन आई वाज फ्लुएंट इन प्रिलिमिनरी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, देन आई स्टार्टेड गिविंग major efforts to mains level questions, especially for reasoning, because puzzles were a very big hectic thing for me, because मेंस लेवल पजल्स मुझसे नहीं होते थे। मैं पूरे उसमें मेंस के टेस्ट में भी मैंने कई बार जब टेस्ट दिए हैं तो मैं सारे क्वेश्चंस कर लेता था, लेकिन जो मेंस लेवल के पजल्स होते थे वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग होते थे। तो उसके लिए आई यूज्ड टू डू 2 to 3 पजल्स डेली, मेंस लेवल पजल्स। मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने जब बोला कि स्टार्ट किया आपने, तो हर Yes, एक सेक्शन में कॉन्सेप्ट्स पहले, फिर आपको Yes, जो ma'am. मतलब लॉजिकल स्टेप होना चाहिए कि Yes, ma'am. सैंपल पेपर तो देखो, हाँ, आफ्टर कॉन्सेप्ट्स यू वेंट टू सैंपल पेपर, उसी से Yes, आइडिया ma'am. लग जाता है कि कितना लेवल क्या है Yes, ma'am. एग्जाम का, एंड हाउ मच यू आर एबल टू डू, व्हाट इज योर वीक Yes, पॉइंट, ma'am. व्हाट इज योर स्ट्रांग पॉइंट, राइट? Yes, लाइक यू आइडेंटिफाइड, ओके पजल्स आर नॉट माय स्ट्रांग पॉइंट, आई हैव yes, टू ma'am. वर्क मोर ऑन रीजनिंग पजल्स, राइट? Yes, हाँ, तो ये आपने आइडेंटिफाई किया, व्हिच इज एक्सीलेंट। ऋतुपर्णा has joined in, okay, reveal your scores, वो भी सब डिटेल में बताएंगे। अच्छा, क्या कोई राजश्री पूछ रहे हैं, क्या टॉपर्स कोई इफ एंड बट नहीं छोड़ते ड्यूरिंग प्रिपरेशन? अच्छा, ये राजश्री बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, बताइए। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि चीजें नहीं होती हैं, कि लाइक मेरे को एक वो क्वेश्चंस आते थे जिसमें पजल्स में स्पेशली होता है, जिसमें अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कुलर मैनर। वो मेरे लिए सबसे बड़ा हेक्टिक था। मैंने उसकी प्रिपरेशन को, मतलब उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को मैंने छोड़ ही दिया था। उसको तो ये सोच के गया था कि अगर एग्जाम में भी ये आएगा तो ये तो छोड़ के ही आना है, इसको तो करना ही नहीं है। भले ही एक क्वेश्चन, वो उसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन जो हैं वो कम अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन वो तो मैंने छोड़ ही दिया था। तो उसके कई बार ऐसा होता है। इफ और प्रोबेबिलिटी मेरे लिए एक क्वांट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। प्रोबेबिलिटी मेरे को समझ में नहीं आता था, तो वो भी मैंने छोड़ा। कौन में प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आता, समझ ठीक में है। नहीं आता था मैम। उसके लिए तो मैंने ये था कि यू शुड बी क्लियर, मतलब ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास इनफ टाइम है उसको करने के लिए तो आप उस पर वो कीजिए, आप उस पर मेहनत कीजिए। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है उस चीज पर फोकस करने के लिए, तो जो आपके अदर कॉन्सेप्ट हैं, जो बाकी कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप इतना शार्प कर लीजिए कि उनके क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करें एग्जाम्स में तो वो गलत नहीं होने चाहिए, वहां पर इफ एंड बट नहीं होना स्ट्रॉन्ग चाहिए। पॉइंट्स, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इन एनी केस यू शुड नॉट गो रॉन्ग विद दैट। नो, यही एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। इफ यू आर स्ट्रांग, बी एज स्ट्रांग एज पॉसिबल। इफ यू आर वीक, तो उसको फिर एकदम छोड़ दो, उसके लिए फिर टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इफ यू आर गिविंग टाइम टू दैट और फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो वो एक तरह से टाइम वेस्टिंग ही है, बिकॉज देयर इज नो आउटपुट। ठीक है। वर यू फॉलोइंग मल्टीपल सोर्सेज फॉर मॉक टेस्ट और ओनली ऑलिवबोर्ड? मैम, आई स्टार्टेड विद ऑलिवबोर्ड, लेकिन ऑलिवबोर्ड के जो टेस्ट लेवल होते हैं वो अलग ही लेवल पर थे। तो वो स्टार्टिंग में मेरे को 3-4 नंबर आते थे, 5 नंबर आते थे। अच्छा, वेरी फ्यू, हाँ, 3-4 बहुत मार्क्स। कम नंबर आते थे एक्चुअली। क्वेश्चंस गलत बहुत होते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्यूरेसी जो थी उस पर मेरा उतना फोकस नहीं था। धीरे धीरे जब मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, फिर एक्यूरेसी पर फोकस ज्यादा किया मैंने। तो मेरा जो बेसिक
मॉक टेस्ट सीरीज जो मैंने ली हैं, तो पहले मैंने ओलिववुड लिया, तो उसके टेस्ट मुझे काफ़ी थोड़े लेवल ज़्यादा लगा, तो फिर आई स्टार्टेड विद टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के टेस्ट काफ़ी ईजी होते थे, तो पहले मैंने उनको किया। जब मेरी वो हैबिट बन गई टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स, फिर मैंने थोड़ा प्रैक्टिस से उस टेस्ट को एनालाइज करने के बाद देन आई मूव्ड ऑन टू ओलिववुड। तो एंड फाइनली पर ये है ओलिवबोर्ड का जिस हिसाब से पेपर लेवल बढ़ रहा है, once you do Oliveboard mocks, you'll not find anything tough in the real exam. That is डेफिनेटली for sure. वो मैंने बताया ना मैम, जैसे कि एग्जाम जो डिमांड कर रहा है और आपकी जो लेवल है उसको आपको ओवरकम करना है, तो ओलिववुड के टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, इफ यू आर एबल टू परफॉर्म गुड इन दैट, वो डिमांड मीट हो जाती है। इफ यू आर एबल टू मीट दैट डिमांड, यू विल Definitely. डू गुड इन एग्जाम्स। मतलब you are able to judge yourself accurately after giving Yes, ma'am. Oliveboard mocks. Okay, this is going to be the level. Am I able to manage this Yes, level? ma'am. Yes, और ma'am. आपको स्टार्टिंग से ही पता है, अगर आप आज भी एक मॉक उठा के दोगे एंड योर स्कोर्स आर टू लेस, यू नो कि बहुत प्रिपरेशन बाकी है अभी। Yes, अगर ma'am. आप मॉक से भी जज करना चाहो अपना लेवल, या एग्जैक्टली। Yes, ma'am. ठीक है। डेली पीडीएफ फॉर करंट अफेयर और मंथली? आई थिंक यू यूज्ड टू डू डेली करंट मैम अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स होते थे। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने कोई कोर्सेज नहीं खरीदे, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं खरीदी स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन किया था। तो हर प्लेटफॉर्म पे, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इनफैक्ट ओलिवबोर्ड पे भी, तो डेली क्विजेज होते हैं। तो डेली क्विजेज में दे गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स, दे विल गिव यू 10 क्वेश्चंस। तो वही आप अटेम्प्ट कीजिए डेली क्विजेज, फिर उसके बाद आप मॉक्स ले लीजिए। तो मैंने अड्डा 247 के भी मॉक्स अटेम्प्ट किए थे। आई और थिंक यू यूज्ड अ लॉट ऑफ सोर्सेज आल्सो। यस मैम, स्पेशली फॉर एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस रिवीजन आप एक दो सोर्सेज से ही करें, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितने सोर्सेज से कर सकते हैं उतने सोर्सेज से करें, दैट विल बी हेल्पफुल। हाँ, प्री नहीं हो पा रहा है तो शुड आई लीव, शुड आई क्विट? आई डोंट थिंक यू शुड। अच्छा देखो, आपको भी कितना टाइम लगा, 3.5 years यू मेंशन, यूपीएससी का इंक्लूड करके, एंड वन ईयर फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन, यस मैम। है ना? तो वो मोटिवेशन कैसे, मतलब हाउ टू कीप यू मोटिवेटेड फॉर सो लॉन्ग, राइट? वो आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आई थिंक मोटिवेशन का बहुत सारे लोगों को है। अतुल, आपका भी क्वेरी में लेती हूँ, हाउ टू ओवरकम प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम। तो पहले हम बात करते हैं आपका मोटिवेशन फैक्टर, what kept you motivated, because it is very difficult to study for long hours and 3 years is a lot of time, 3.5 years। ठीक है, पहले वो, फिर एग्जाम में जो कैसे हैंडल करना है प्रेशर। ठीक है, दो चीजें। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मोटिवेशन। मैम मोटिवेशन के लिए, मेरे लिए जो मोटिवेशन का पॉइंट था, दैट वाज आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स। अच्छा, मुझे आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स टू ब्लो ऑफ द स्ट्रीम। जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, उसके लिए आई यूज्ड टू लिसन टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स, वो मैं सुनता था। प्लस आई यूज्ड टू रीड गुड आर्टिकल्स एंड लिसन टू ओशो स्पीचेस। एक्चुअली ओशो इज अ ग्रेट पर्सनालिटी फॉर मी, ही हैज बीन अ मेंटर फॉर मी पर्सनली ओनली, जो फिलोसोफर थे। तो उनकी स्पीचेस में सुनता था, मोटिवेशनल स्पीचेस, वो मुझे अच्छे लगते थे। प्लस जब ग्रेजुएशन हो गया और उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, दे हेल्प मी अ लॉट। कई बार फेल, एक्चुअली इन दिस 3.5 years ऑफ प्रिपरेशन आई फेल्ड 11 एग्जाम्स। 11 एग्जाम्स इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम, आई फेल्ड 11 एग्जाम्स। और बाकी बैंकिंग वगैरह के भी कई सारे एग्जाम्स मैंने स्टार्टिंग में दिए थे, आई फेल्ड 11 एग्जाम्स। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आने लग गई थी। तो मेरे लिए जो दो मोटिवेशनल पॉइंट्स थे, और जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उसको ब्लो ऑफ करने के लिए, आई यूज्ड टू वर्क आउट एट होम। मेरे लिए वर्कआउट बहुत अच्छा होता, बिकॉज इफ यू वर्क आउट, हैप्पी हार्मोन्स आर रिलीज इन द बॉडी, और वो मेरे लिए एंटी डिप्रेसेंट का काम करते थे। प्लस आई यूज्ड टू लिसन टू सॉन्ग्स, एंड वही चीजें थी। प्लस सबसे बड़ी चीज ये थी कि आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स जो डिस्ट्रैक्शंस बहुत करती हैं। लाइक मैं कभी न्यूज़पेपर्स जब भी लेता था, तो आई यूज्ड टू रीड पीडीएफ्स, तो मैं एडवर्टाइजमेंट फ्री न्यूज़पेपर्स लेता था। प्लस आई नेवर यूज्ड टू स्टडी एनी पॉलिटिकल न्यूज़। मैंने न्यूज़ चैनल्स देखना बंद कर दिया था। आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स, नॉट रेगुलरली बट समटाइम्स आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स। जो प्रिपरेशन मेरा लेवल का है, जो भी चीज़ क्वेरीज होती थी, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करता था, जो भी बाकी लोग भी जो प्रिपेयर कर रहे थे। तो दैट हेल्प मी अलॉट। और बाकी जो मेन मोटिवेशन है वो मेरे पेरेंट्स से ही मुझे मिला है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि कोई बात नहीं, आप फेल हुए, ट्राई, कीप प्रिपेयरिंग। और फिर मेन मोटिवेशन जो आप लोगों के सेशंस होते हैं डेली, जो मोटिवेशनल्स आप स्टार्टिंग में देते हैं, आदित्य सर ने काफ़ी मोटिवेट किया, आपके सेशन से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो मेन चीज़ मेरे लिए ये थी मोटिवेशन के लिए। और डिप्रेशन के लिए मैंने बताया कि आई यूज्ड टू वर्क आउट अलॉट। वर्कआउट करना मुझे घर पे ही अच्छा लगता था।
and that helped me a lot. अच्छा, तो ये तो सेल्फ डिसिप्लिन है आपका ओशो, है Yes, ना, ma'am. कि हाँ वर्कआउट किया और फिर ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस टोटली इग्नोर किया, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, वो मोटिवेशंस कम कर देते हैं. और 11 सी आई वुड लाइक टू हाईलाइट लकी योर आंसर चौधरी यू आर आस्किंग, सो ये स्ट्रगल ही है. जैसे सर ने बोला कि he failed in 11 exams and after Yes, ma'am. that still keeping that continuity in preparation is a big deal. ये Yes, सब नहीं कर पाते हैं, so that is Yes, why difference between winners and people who are not able to clear, right? yes, ma'am. ठीक है. One more thing which I want to ask you is, ठीक है, motivation factor. What were your what were your steps to handle pressure during the exam? Okay, during the exam time or when you are attempting the questions, how did you manage that? मैम एक्चुअली वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फेमस एक डायलॉग है, अगर जो लोगों ने मूवीज देखी होंगी, फास्ट एंड फ्यूरियस एक मूवीज है, सीरीज है, उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जब मैं कार में होता हूँ तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, उस समय मैं और मेरी कार और फाइनल पॉइंट होता है. तो वही चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है कि जब मैं एग्जामिनेशन में होता हूँ तो एग्जामिनेशन का वो जो 1 सेकंड जब स्टार्ट होता है और जब फाइनल 1 सेकंड खत्म होने वाला होता है, उस सेकंड के बीच में मैं अपनी जो 1 साल की प्रिपरेशन है, 1 साल की जो मेहनत है, जो 1 साल एफर्ट्स किए हैं, उनके बारे में सोचा और उनको यहाँ पर अप्लाई करके उनको एफर्ट्स जो भी मैंने किए वो एग्जामिनेशन में कैसे यूज करने हैं, बस उसके बारे में मैं सोचता था. एग्जामिनेशन टाइम में मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता था कि घर जाना कैसे है, लेट हो जाएंगे, पेन नहीं है, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, ये सब चीजें स्टार्टिंग में ही मैं चेक कर लिया करता था. और कई बार एग्जामिनेशंस में ऐसा होता था कि मेरे कीबोर्ड ठीक से वर्क नहीं कर रहा या माउस ठीक नहीं कर रहा, तो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि ये मेरे लिए ठीक काम नहीं कर रहा, जस्ट चेंज इट. तो स्टार्टिंग में ये चेक कर लेना चाहिए था. और कई लोगों का आईबीपीएस पीओ का जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट था तो कई लोगों का जो कीबोर्ड था वो काम नहीं कर रहा था. दिस हैपेंड विद माय सिस्टर आल्सो, शी आल्सो वेंट फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस और उसका भी कीबोर्ड काम नहीं किया था, तो इसलिए शी लॉस्ट मार्क्स. वो सिर्फ लेटर अटेम्प्ट कर पाई थी, ऐसे शी वाज नॉट एबल टू राइट. तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में ही आप चेक कर लीजिए. चेक करो, you have to be cautious, right? हाँ, ये सब चीजें ही जो बीच में एग्जाम ड्यूरेशन में डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म करती हैं. वही बस ट्राई टू फोकस एंड जो आपने एफर्ट्स 1 साल में किए हैं वो आपको 1-3 आवर्स जो आपके एग्जामिनेशन है वो हेल्पफुल मिलेंगे. मतलब वही आपको चीज. अपना बेस्ट देना है वहां जाके. हाँ, टेक्निकली वही है कि जो आपने टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी यू हैव टू परफॉर्म. ठीक है. ओके. अच्छा, अदर देन स्टडिंग, लाइक आपने बताया वर्कआउट रूटीन हो गया, स्टडिंग हो गया, कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ डेज वी फील बोर्ड, नहीं करना कुछ, आज कुछ नहीं करना, तो डिड यू टेक गैप्स और वर यू स्टिल रेगुलर, लाइक आज बिल्कुल भी मन नहीं है, या आज बिल्कुल मतलब आई एम टू टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, आई नीड अ ब्रेक, वो वाला सिचुएशन आता था कभी? यस मैम, एवरी 15 days आई यूज्ड टू टेक 1 day break. और उस 1 day 15 days 1 day, ये नहीं बताई आपने बात. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो. ठीक है, 1 डे ब्रेक क्या होता था? रेगुलरली नहीं होता था, मतलब ऐसा नहीं कि हर 15 डे में रेगुलरली ब्रेक लिया है, पर जब लगता था कि हाँ प्रिपरेशन जब थोड़ी बेहतर हो गई है तो आई स्टार्टेड टेकिंग 1 day ब्रेक. उस 1 day ब्रेक में आई यूज्ड टू गो आउट, टेक वॉक्स, आई यूज्ड टू सिट इन द सन, क्योंकि पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैं घर पे ही रहता था, बाहर नहीं जा पाता था. तो उस टाइम में मैं सिर्फ आई यूज्ड टू गो आउट, टेक वॉक्स, स्टैंड इन द सन, एंड माय मोस्ट फेमस वेरी फेवरेट हॉबीज ड्राइंग एंड स्केचिंग. सो आई यूज्ड टू, आई रही थी इस पे, हॉबीज बताओ. आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड स्केच, आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड स्केच, मेरे को बहुत अच्छा लगता था. आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड स्केच. मूवीज नहीं देखी, मूवीज वगैरह नहीं देखी मैंने पूरे ड्यूरेशन के टाइम में. 1-1.5 साल, लगभग 1.5 year, आई नेवर वेंट टू सी एनी मूवी. मूवीज नहीं देखी ना, घर पे नहीं. नो नेटफ्लिक्स नो, नॉट एट ऑल मैम, आज तक नेटफ्लिक्स का नो सीरीज, हाँ, मतलब ये सब नहीं. ठीक है, सो ड्राइंग एंड स्केचिंग वर योर अदर हॉबीज. ओके, ठीक है. बट यू सेड दैट ओके, दिस ब्रेक आल्सो, दैट 1 day break after 15 days you started with it after you thought okay, you have done quite a bit of preparation, concepts हो गए हैं clear, अब थोड़ा सा एक ले सकते हैं 1 day. Okay, what is the importance which is very obvious, like what is the importance of regularity? Regularity is the most important thing, because अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो it's like if you are trying to take 2 steps forward और आप रेगुलर नहीं है आगे स्टेप्स लेने में, तो if you take 2 steps forward and if you're not regular you will come back a step. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो जो कॉन्सेप्ट्स आपने बिल्डअप किए हैं इतने टाइम में,
जो एफर्ट आपने किया है वो फिर लॉस हो जाएगा। उसको वो सबसे ज्यादा जो है एग्जामिनेशंस में इम्पोर्टेंट है कि आप वो उसको अवॉइड करें। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलरली प्रिपेयर करके 3 मंथ्स में एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर लेते हैं। लाइक आज नोटिफिकेशन आया, दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग रेगुलरली, बहुत हार्ड वर्क किया एंड विद इन 3-4 मंथ्स निकाल लिया पेपर। एग्जाम्स प्रिपेयर कर लेते हैं। अच्छा, तो सुशील बोल रहा है इतना सैक्रिफाइस करना पड़ता है क्या आईबीपीएस पीओ के लिए? करना मैम पड़ता है, हाँ। एक बैंकिंग के लिए इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पर मेरी एक्चुअली हैबिट थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, तो उस समय बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता था। उस समय व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आई वाज अवे फ्रॉम होम, तो पीजीज में हम लोग रहते थे। वी यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग एट 10 o'clock एट नाइट, और जगने के लिए वी यूज्ड टू प्रिपेयर टी, चाय पिया करते थे हम लोग जगने के लिए। तो हम लोग वी यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग एट 10 o'clock एट नाइट, और मेस में पढ़ते थे हम लोग क्योंकि वहाँ टेबल काफी बड़ी होती थी और मेस में हम लोग पढ़ते थे। तो वी यूज्ड टू स्टडी टिल मॉर्निंग कंटिन्यूसली 6 o'clock, और 6 o'clock मॉर्निंग पढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद देन वी यूज्ड टू गो टू स्लीप फॉर 4 or 5 hours, और 5 hours मैक्सिमम स्लीप उस समय मैं लेता था। तो वो हैबिट बन गया था कि रात को पढ़ना, सुबह 4 or यू 5 मेड अ hours रूटीन। यस मैम, वो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी बन गया था जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और वो जो स्ट्रगल है, जो सब चीज़ें छोड़नी थी, वो अपने आप छूट गई, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया करना स्टार्ट किया तो फ्रेंड से कम्युनिकेशन गैप थोड़ा बढ़ गया, उनसे बात नहीं करता था मैं, क्योंकि टाइम उनको अगर दे दिया तो फिर अपनी प्रिपरेशन के लिए लॉस हो जाएगा। वो जो रेगुलरिटी है, वो जो रिविजन है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके फिर वो लोग भी समझ गए कि हाँ प्रिपरेशन चल रही है उसकी, तो उन लोगों ने भी बॉदर नहीं किया ज़्यादा। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने सब चीज़ें धीरे धीरे छूट गई। अब आज जब एग्जाम क्वालिफाई हो गया, जब सबको पता लगा, तो इतने सारे लोगों के एक साथ फोन आए जब कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने लोगों के एक साथ फोन आ जाएंगे। गुड, मतलब फ्रेंड्स भी And- समझदार है, हाँ, फ्रेंड्स समझ गए थे कि हाँ भाई ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी स्पेस यस चाहिए मैम, प्रिपरेशन की। हाँ, यस मैम। तो यू डिडंट फील यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग नो जब मैम, उस प्रिपरेशन समय में? प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा फील होता था, क्योंकि मैं भले ही बात नहीं करता था, लेकिन वो इंस्टाग्राम फीड्स और लाइव फेसबुक फीड्स तो देखते ही थे। तो उसमें फ्रेंड्स जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो वो सब देखकर बुरा लगता था। लेकिन आई यूज्ड टू थिंक कि वन डे मैं भी जाऊंगा घूमने ऐसे ही, जब व्हेन आई विल बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, जब फाइनली स्टेबल हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, तो मैं भी घूमने जाऊंगा इसी तरीके से, एंड फिर मैं भी उस चीज को तो एक्सपीरियंस इतना कर पाऊंगा। पेशेंस था आप में? हाँ, पेशेंस था, ये है। पेशेंस पूरा था कि हाँ, मतलब मुझे हाँ, लगता है कि हाँ अभी ठीक है, मेरा टाइम भी आ जाएगा, है यस ना, मैम। आफ्टर द फाइनल प्रिपरेशन। तो फेसबुक और इंस्टा पोस्ट नहीं दे छोड़े आपने एग्जाम, मतलब मैम कभी कभी मतलब देख लेते थे, हाँ। रेगुलरली नहीं देखता था, कभी कभी ऐसा हम्म, होता था कि जैसे थक गए, टेस्ट अभी जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो उसके हम्म, बाद 15-20 मिनट्स के लिए आई यूज्ड टू जस्ट टेक माय फोन एंड आई यूज्ड टू स्क्रॉल एंड ऑल, बिकॉज मैम एक्चुअली मेरे घर पर एक ही लैपटॉप था, हम्म, एंड मेरा फोन जो था एक्चुअली वो मेरी सिस्टर यूज करती थी टू टेक लाइव क्लासेस ऑन ऑल। तो वो भी ओके, मेरे पास नहीं होता था, क्योंकि उसका भी प्रिपरेशन चल रहा था। वो भी पूरा शेड्यूल के हिसाब से अपना प्रिपेयर करती थी, टेस्ट वगैरह। तो हम्म, मेरे पास फोन उतनी देर नहीं रहता था। तो जितना टाइम के लिए मुझे 15-20 मिनट्स के लिए फोन मिलता था, तो मैं उस समय देख लेता था कि कुछ क्या नया हो रहा है, कई हम्म, फ्रेंड्स जो थे क्या क्या हो रहा है। तो मतलब इस तरह था, रेगुलरली कभी मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया। ठीक है, गुड। बट आई लाइक द पेशेंस यू हैव, हाँ एक्चुअली। ठीक है, और मुझे ये बताओ कि मतलब नेक्स्ट टारगेट तो आपने बता दिया। यस मैम। ओके, हाँ, नेक्स्ट टारगेट आपने बता दिया सिविल है कि सर्विसेज। हाँ सिविल सर्विसेज है। तो अभी क्या प्लान है नेक्स्ट? पहले ब्रेक लेंगे, अभी तो ज्वाइन करोगे, बहुत सारी लर्निंग है इस यस मैम, सेक्टर अभी में। तो 3-4 महीने के लिए आई वांट टू विजिट ऑल दोज फ्रेंड्स जो मैं पिछले 3-3.5 साल से नहीं मिल पाया। वो लोग अच्छा। आगरा में भी नहीं है, सब चले गए बाहर, तो मैं उनसे थोड़ा मिलने का प्लान है। हम्म, लगभग 2-3 महीना, जब तक मैं ज्वाइनिंग नहीं हो जाती और जहाँ पर भी पोस्टिंग होगी वहां पर नहीं चला जाता, तब तक के लिए आई टेक अ ब्रेक। लेकिन जहाँ एक बार पोस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद आई टेक ऑल माई बुक्स, ऑल माई स्टडी मटेरियल जो उस समय तैयारी के लिए यूज करता था, वो सब ले जाऊंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, प्रोबेबली बाय सितंबर आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। ठीक है, नाइस, गुड। अच्छा, अच्छा, निष्ठा इज योर सिस्टर क्या? Yes, ma'am. She's a very regular of your student, if you remember. She is my regular student. Yes, Yeah, ma'am. She's your actually, regular good to student. know that. I didn't know it. Huh. Yes, ma'am. She's Nishta my is actually sister. writing here. He is my brother. I'm मैम so शी proud of that. एक्चुअली शी इंस्पायर्ड मी टू गो फॉर बैंकिंग, उसने बहुत हेल्प करी है। अच्छा। वो जो मेंस का पजल वाला मैंने पार्ट बताया था, वो हम्म, उसी ने मेरी प्रैक्टिस कराई थी। निष्ठा शी नहीं, हाँ। वाज वेरी गुड इन दैट, और वो उसी हम्म। ने मेरी हेल्प करी है। शी आल्सो क्वालिफाइड आईबीपीएस क्लर्क दिस ईयर, सेम। Nishta, excellent. Huh? Good to know this. Nishta is there in my classes.
Yes, So ma'am. your name maybe I missed in the classes, but निष्ठा का मुझे याद रहता है, ये रहती है Yes, ma'am. evening classes में, she is there, editorial also she is there, so I know कि हाँ ये regular रहती जरूर है. हाँ, तो अभी तो नेम से ही समझ में आता है ना, we don't get to see online classes में. Yes, तो ma'am. मुझे नाम से याद रहता है कि हाँ regular student. Okay. Yes, ma'am. So excellent, excellent निष्ठा, great job. हाँ, so great. अच्छा, another thing, जब आप बोल रहे हो कि आगे भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखोगे, ठीक है, फाइनल गोल, तो ये वाला प्रोसेस, मुझे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछना है कि जैसे हम गोल्स, आपका ये गोल बना कैसे, लाइक यू हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट, और लाइक व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस, और या तो फिर गवर्नमेंट जॉब या बैंकिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ग्रेजुएशन के बाद यूजुअली सब लोग इतने क्लियर नहीं होते, वी आर नॉट क्लियर, right? No, And you coming from zoology background, yes, ma'am. that is also very different. Yes, So how did this like goal came into picture, and like yeah, I want to know the answer for that. Yeah. मैम एक्चुअली मेरा जब 12th कंप्लीट हो गया था, उसके बाद क्योंकि मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड था, पीसीबी बैकग्राउंड था मेरा, तो आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. तो Okay, मैंने doctor first. यस मैम, आफ्टर 12th के लिए, 12th के बाद भी आई गेव 1 ईयर गैप बिफोर, इन बिटवीन माय स्कूलिंग एंड माय ग्रेजुएशन. 1 साल का गैप लिया टू प्रिपेयर फॉर प्री मेडिकल, और उसके भी एग्जाम्स दिए थे. तो जो कॉलेजेस मुझे अलॉट हुए थे, दे वर नॉट वेरी गुड, और वो काफ़ी दूर भी थे. तो माय मदर वाज नॉट रेडी टू सेंड मी अवे फॉर दोज कॉलेजेस. तो उसके लिए वो ड्रॉप किया, और कॉलेजेस भी ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे, मतलब उन कॉलेजेस में जाने का मन भी नहीं था. आई वांटेड टू प्रिपेयर अगेन. तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया था मैंने, एंड माय ग्रेजुएशन वाज ऑफ 3 इयर्स. तो उसके भी फर्स्ट ईयर जो था, उसमें भी मैंने तैयारी करी थी प्री मेडिकल की, कि भले ही 1 साल ग्रेजुएशन करते करते प्री मेडिकल की तैयारी करते रहेंगे, और फिर उसका एग्जाम अगर हो जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आई विल टेक दैट. पर वो प्रिपरेशन नहीं हो पाई, बिकॉज कॉलेज से जो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते थे, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाई हो जाता था. तो प्रिपरेशन में प्री मेडिकल की सेपरेटली नहीं कर पाता था. ओके. फाइनली जब प्री मेडिकल का ड्रीम को छोड़ दिया कि ये नहीं करना, तो फिर बहुत ज़्यादा 1 साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए मैं काफ़ी डिप्रेस था कि क्या करना है आगे, क्या करना है. कुछ गोल सेलेक्टेड नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर लाइक, उनका निश्चित था कि वो लोग यही करने वाले थे. उनका दे वर फिक्स कि अब उन्हें ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, एंड देन दे विल बी लाइक दैट. तो वो मेरे लिए फिक्स नहीं था. तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो फिर आई विल गिव टाइम टू समथिंग दैट इज द बेस्ट. फिर मैं सबसे बेस्ट चीज के लिए तैयारी करूंगा. आई वांट टू गिव माय एफर्ट्स. अगर मुझे एफर्ट्स करने ही है, तो मैं बेस्ट एफर्ट्स करूं. देन माय फादर, स्पेशली मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है मेरी पूरी प्रिपरेशन में. उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट, इफ़ यू वांट टू गिव योर लाइफ सम वैल्यू, अगर आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट अपनी लाइफ में करना है, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रिपरेशन करें किसी बहुत अच्छे एग्जामिनेशन के लिए. उन्होंने मुझे जो है ये ड्रीम सिविल सर्विसेज का, उन्होंने मुझे दिखाया, और उन्हीं की मोटिवेशन से, उन्हीं की गाइडेंस से मैं फाइनली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन. फिर वहाँ से पूरा स्टार्ट प्रोसेस. हुआ. और स्टार्टिंग में टाइम भी लगता है, जब